Namaste बिटिया, I am JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will discussing about examination and the treatment of Kas Rog. First of all, in the series of examination of Kas Rog, then what is the introduction of Kas Rog? Kasna Kas hai. The disease is which aggravated Vayu comes violently out of the Shiras Srotas is called as Kas. Acharya Charak defines Kas is release of obstructed Vayu resulting in the production of an abnormal sound. Kas may be dry or productive. Kas Roga is described in detail in Charak Samhita, चिकित्सा स्थान चैप्टर 18, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र चैप्टर 52 एंड अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान चैप्टर 3. सामान्य निदान इज धूल धूम रज उपघात अति व्यायाम अति रुक्ष अन्न सेवन भोजन विमार्गमन और अधारणीय वेग धारणम एंड कासस्तु वेग धारणम. विशिष्ट निदानित वातस कास निदानित रुक्ष आहार सेवन शीत आहार सेवन अति कषाय रस आहार सेवन प्रमित आहार सेवन अति मैथुन अधारणीय वेग धारण आयास एंड श्रम. पित्तज कास निदान इज कटु आहार अति सेवन उष्ण आहार अति सेवन विदाही आहार अति सेवन अम्ल रस अति सेवन क्षारीय पदार्थ अति सेवन क्रोध अग्नि संताप अति सेवन एंड सूर्य संताप अति सेवन. कफश कास निदान इज गुरु पदार्थ अति सेवन अभिसंधि पदार्थ अति सेवन मधुर पदार्थ अति सेवन स्निग्ध पदार्थ अति सेवन अति निद्रा अति विश्राम. शतज कास निदान इज अति मैथुना अति भार वहन अति अध्वगमन एक्सेसिव वॉकिंग अति युद्ध एंड टू कंट्रोल अश्व एंड गज horse and elephant. शैज कास निदान इज विषम भोजन असात्म्य भोजन प्रकृति विरुद्ध भोजन अति मैथुन अधारणीय वेग धारण अति चिंता. सामान्य संप्राप्ति इज आचार्य चरक हैज एक्सप्लेन्ड सामान्य संप्राप्ति ऑफ कास एज विशिएटेड प्राण and Udan Vayu attain upward movement and get filled in the srotas which are present in the Shirah, Urah and Kantha Pradesh. This result in increased pressure inside the Hanu, Manya and Netra also, causing contraction of Netra, Prishtha, Urah, Parshva Pradesh, eventually resulting in forceful expulsion of air producing a typical sound in the presence or absence of sputum. Classification of Kas Rog in Ayurvedic literature. Kas is divided into 5 types: Vatik, Paitik, Kafash, Shataj and Shayaj. Purva roop of Kas Roga is Shokpurn Gal, शोकपूर्ण आस्य कंठकंडु भोजनाम अवरोध है अरोचक अग्निसाद शब्द वैषम्य. नेक्स्ट इज भेदानुसार लक्षण. वातिक कास इज ऋतुशूल पार्श्वशूल वक्षशूल शिरःशूल स्वर भेद शुष्क उरह एंड शुष्क कंठ
शुष्क वक्त्र, लोमहर्ष, शुष्क कासः, शुष्क and अल्प कफ. Next is पित्तस्कास, तिक्त आशय, तृष्णा, मोह, अरुचि, भ्रम, ज्वर. नेक्स्ट इज कफस, मंदाग्नि, अरुचि, छर्दी, पीनस, उत्क्लेश, गौरव, लोमहर्ष, मधुर आशय. एंड नेक्स्ट इज शतजकास, पूर्व शुष्क कास, तह, उरहशूल, दूस्पर्श, अभिताप, ज्वर, श्वास, स्वरभेद. एंड क्षयजकास इज दुर्गंधित, हरित रक्त, प्रयुक्त कफ. नेक्स्ट इज द सिम्टम ऑफ क्षयजकास इज क्रश, स्निग्ध, नेत्र कांति युक्त, एंड गृहिणी, मिश्र ज्वर, पीनस, अरुचि, अभिसंताप, वर्च. भिन्न संहात, वर्चः. दौर्बल्य, स्निग्ध, अच्छ मुख, व्रण एंड त्वक. पानीपात, सलक्षणता, always finding fault in others. Thank you. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. Thank you. नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो. आई एम JVN डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस ऑन कास रोग. साध्य असाध्यता ऑफ कास रोग. वातज कास इज साध्य, पित्तज कास इज साध्य, कफज कास इज साध्य, and शतज कास is याप्य and क्षयज कास is also याप्य. विशिष्ट साध्यता असाध्यता in क्षयज and शतज कास. क्षयज and शतज कास in बलवान साध्य and क्षयज and शतज कास in क्षीण असाध्य. जर कास is याप्य. चिकित्सा. जरा कास in जरा अवस्था is याप्य. चिकित्सा. वातिक कास in रुक्ष शरीर फर्स्ट इंटरनल स्नेहन विद वातनाशक द्रव्यास संस्कारित घृत बस्ती पेय यूष अवलेय एंड शीर. एक्सटर्नल स्नेहन विद स्निग्ध धूम अभ्यंग एंड परिषेक एंड स्वेदन. इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेबंध एंड असम्यक अपान वायु प्रवृत्ति should be treated with अनुवासन बस्ती. Patient with dryness of mal and urdhva of apan vayu should be treated with घृतपान after meal. If vatajkas is associated with pitta and cough should be treated with स्नेह विरेचन. घृत योगास. पिपल्यादि घृत, त्रियुष्णाद्य घृत, रासनाद्य घृत, विडंगादि चूर्ण विद घृत, चूर्ण ऑफ यवक्षार, सज्जीसार एंड पंच लवण विद घृत, चूर्ण ऑफ कांचनार, शोठ एंड सुगंध वाला विद घृत. दौर्बल्यादि लेह, विडंगादि लेह एंड
दूस्पर्शादि लेह, वृडंगादि लेह, चित्रकादि लेह, अगस्त्य हरितकी, and 200 with avlay on it. Dhumpan is indicated with patient is suffering from headache, nervousness and hridyatam. Manashiladi dhum and Prapondrikadi dhum. Pathya of Vatikash, Shali rice, Yav, Dhoom and Shashtik bhat with ग्राम्य आनूप, औदक मांस रस और उड़द यूष और आत्मगुप्ता यूष. पेया cooked with अजवाइन, पीपल, बेल, सौंठ, चित्रक, रासना, जीरक, परिसौपनी and पलाश with added स्नेह, सैंधव, लवण and दाड़िम रस. शाक द्रव्यास like बथुआ, मकोई, मूली, तिल तेल, इक्षुरस, दधी and madhur amla lavan ras. Dravyas are beneficial in Vatic Kas, Pittas Kas. If Pittas Kas is associated with aggravated cough, then Vaman should be done with Ghrith Sanskarit with Vamak Dravyas. Vaman can be done with Kwath of Madanphal, Gambhari and Madhu Yashti Churn. When aggravated cough dosha come out of the body with Vaman, patient should be given Madhur and Sheetal Pey and Vilepi. If Pittach Kas is associated with thin and mildly aggravated cough, then the patient is given Virechan with Nishod Churn and Sharkara. If cough is thick, then Nishod Churn is given with Tiktras Dravyas. If during Vaman thin cough is coming out of the body, then patient should be given Snigdha and Sheetal Annapan. If thick, then Ruksh and Sheetal Annapan should be used. Various Sneh and Avleh formulation should be used in Pittashkas. Leha Yog, Sneha Yog, Pathya Dravyas like Shamyak, Kodo and Yav Anna with Madhur Jangal Prani Masras or Mudag use, Moong use in Tikta Shak. Anupan is like Sharkara Ambu, Draksha Ras, Ikshu Ras and Godogdha, Madhur and Sheetal Dravyas. Kafash Kas. If Rogi is Balwan, the woman should be given after Shodhan. Patient is treated with Laghu, Ruksh and Ushna Anna and Yav. Anupan is like Madhu, Kanji, Dadim Ras, Ushna Jal, Takra and Nigad, Swachh Madira, Pushkaradi Him, Katfaladi Kwat, Pathyadi Kalk, Dashmuladi Grit, Kantakari Grit, Kulathadi Grit, etc. Shataj Kas. It should be considered as emergency and patient should be promptly treated with Madhur and Jivaniya Varg. Pipalyadi Sneh. Patient of Shataj Kas should be treated like Pittaj Kas, specially treated with Sheer, Sarpi and Madhu. Jivaniya Grit should be used in patient those Jatharagni is good and patient is spitting blood with cough and also associated with Dah. Shayaj Kas. If Shayaj Kas is manifested with all symptoms and in weak patient, then it should not be treated. In Roga in Naveen and Rogi is Balwan, then it is treated although disease is incurable. In Roga is Nutan and Rogi is weak, then it is treated with Mridu Shodhan with Amaltash Ras pulp, Amaltash pulp and Grit Sanskarit and Vidarikan. If Vat is aggravated in Shayaj Kas, patient with Sheen cough and Pit, then Gritpan and Kakda Singhi, Dogd, Bala and Mahabala Sanskarit Grit. If Shoth is present, then patient should be treated with Mishrak Sneh, Anuvasan Basti. Dvipach Muladi Grit, Guruchadi Grit,
कासमर्दादि घृत, हरितकी लेह, द्राक्षादि लेह, चित्रकादि लेह, पद्मकाची लेह, जीवंत्यादि लेह, etc. Some of ras bhasma pishti like Chandramrit ras, Lakshmi Vilas ras, Abrak bhasma etc. Some of vatis like Lavangadi vati, Marichadi vati, Vyoshadi vati etc. Some of churn like Shringyadi churn, Shatyadi churn, Shitopaladi churn. Some of Kwat and Asavarish like Panchmuli Kwat, Kantakari Kwat, Gojivadi Kwat, Dashmul Kwat etc. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.